मैडम वर्षा प्रियदर्शिनी पुरीघाट थाना पुलिस स्टेशन में गोटे कंप्लेंट देइछन्ती मो विरुद्ध रे कि मु सोशल मीडिया रो साहाय्य नै कि तांको विरुद्ध रे अपप्रचार करूची, तांको नारीत्व को अपमानित करूची, तांकर जो मर्यादा जो स्थान से निज परिश्रम रे निज चेष्टा रे निज परिवार आशीर्वाद रे भगवान कर आशीर्वाद रे से पाइछन्ती ताकू नष्ट करियो चेष्टा करूची। रास्ता घाट तांको चलिया को दउ नाही, तांको मु कोडे धमकी देइथिली आगुरु। जो महिला सबु बेले कहउछन्ती कि नारी केबे चुप रहिबा कथा नो, घरई हिंसा विरुद्ध रे स्वरोत्तोलन करिबा कथा, काहाकू भी डरिबा कथा नो। आश्चर्यर कथा कि 8 वर्ष होबे तांको ऊपर एते निर्यातना होतला कि से चुप केमती रहि जाइथिले। कोनोसी पुलिस स्टेशन रे कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन रे मो विरुद्ध रे बा मो परिवार विरुद्ध रे केमिति गोटी भी कंप्लेन नथिला। सबु कंप्लेन केवल मु डिवोर्स फाइल कला परे आसिला तमरो, ता पूर्व गोटी भी गोटी कंप्लेन नथिला तम तरफरु। इज इट नॉट सरप्राइजिंग वर्षा? सतटू केते दिन तुम दौड़ब? एनीवेज बर्तमान मु आउ टिके बेसी सत तुमको जणै दउची वर्षा, तुमको टिके मने पकई दउची। ये होची कोर्ट रो हमर कटक कोर्ट ऑफ द जज फैमिली कोर्ट कटक रो सीपी नंबर 246 ऑफ 2021 अनुभव महांती वर्सेस वर्षा प्रियदर्शिनी रो ऑर्डर शीट ट्रू कॉपी तार ट्रू कॉपी मु एई ऑर्डर शीट रो प्रति पेज गणमाध्यम को भी दवा को प्रस्तुत अच्छी। मोर ऑफिस को कहिबी समस्त को जोगई दवा पई, आउ सोशल मीडिया रे भी चेष्टा करी जदि मैं अपलोड कर दे पारिबी, देखि पारिबे आपण माने समस्त प्रत्येकटी लाइन प्रत्येकटी वर्ड आपण माने पढ़ी पारिबे। बेसी समय न नै कि केतरा जिनस खाली कहि दवा पई चाहूची। जेतबेले मु दिल्ली रे प्रथमे डिवोर्स पिटिशन फाइल करिथिली वर्षांक विरुद्ध रे, सेतबेले मु ता सहित आउ एक पिटिशन मध्य फाइल करथिली। गोटे पिटिशन फाइल करथिली जोथरे मु मान्यवर अदालत को अनुरोध करथिली कि आमे दुई जन खाली मु नुहे आज्ञा, अनुभव महांती एका नुहे, अनुभव महांती को सहित श्रीमती वर्षा प्रियदर्शिनी मध्य आमे दुई जन बहुत जनाशुना व्यक्तित्व ओडिशार। आम दुई जनकर बहुत फैन फॉलोअर्स अछंती, आमर समर्थक बहुत अछंती। आम दुई परिवार मु बारंबार कहूँ दुई परिवार आज्ञा, लेखा भी आप पढ़ी दे पारिबे। दुई परिवार मान सम्मान मर्यादार जमती कौनसी क्षति न हो सेथिपाई आम मैरिटल डिस्कॉर्ड कौनसी खबर गणमाध्यम को ना पब्लिश करिवार अनुमति दिया जाऊ, ना देखेबार अनुमति दिया जाऊ। कारण यह हेले आम दुई जनकर परिवार मान सम्मान सबु तलक पड़िबो एवं आम समर्थक मानक भी बहुत कष्ट हबो। आ जेहेतु मु राजनीति रे अच्छी विशेष करी सेथिपाई मते जो माने विरोध करंती सेमानक पई गोटे खेलघर हे जिवो। एटा बाहागरटा गोटे परिहास रे परिवर्तन कर देबे से माने। एंड जो डर मोर थिला जोथि पई कि मु से पिटिशन फाइल करथिली दिल्ली रे पटियाला कोर्ट रे मो डिवोर्स पिटिशन सहित माने जुलाई 2020 रे ताकू कितु मैडम वर्षा प्रियदर्शिनी विरोध कले। जेतबले ट्रांसफर है कि दिल्ली रो आसिला कि कटक फैमिली कोर्ट रे केस चलला, सेठी से विरोध करथिले। आ मु आज ऑर्डर टाकू इंग्राजी रे जोटा लिखा छै ताकू पढ़ी दउची, मझिरे मझिरे मु आपन को बुझे देवा को भी चेष्टा करिवि जदि पारिबी कोठी। एंड आई एम श्योर आपण मानक पई सहज हो इंग्लिश रे भी बुझी जिवे। इट्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस। मु एटा अपलोड भी करिवि। आई एम सेइंग दैट बारंबार मु कहूची, मु खाली पढ़ी दउची एटा ट्रू कॉपी बोली आपण माने देखि पारिबे। जदि कौन सी क्रॉस वेरिफिकेशन दरकार आपण सेटा भी करि परिबे। ऑर्डर डेटेड 15/7/2021 15/7 माने 15 जुलाई 2021 मु करथिली डिवोर्स पिटिशन फाइल जुलाई 2020 रे। सेतबेले मु गोटे पिटिशन फाइल करथिली बा आईए कोन गोटे फाइल करथिली जोथरे लिखा हितला गणमाध्यम ठू आम दी जनकर मैरिटल डिस्कॉर्ड मैटर दूर रखा जाऊ, दी जनकर मान सम्मान पाई, दी जनकर मर्यादा पाई, दी जनकर परिवार मान मर्यादा पाई आ आम फैंस मानकर पाई। कोर्टर ऑर्डर शीट
The learned counsel for both parties are present and file their respective hajira. The husband petitioner, namely Anubhav Mohanty, Mu, is present, whereas the wife respondent, namely Varsha Priyadarshini, is absent. Varsha Priyadarshini was absent. Se upasthita nathile. The learned counsel for the wife respondent filed the objection to the petition dated 6/7/2020. Varshankar okila mu jo petition file करथिली 6/7/2020 ର ताकू से गोटे objection file कले at the time of filing of the proceeding under section 13(1) of HM Act 1955 before the learned principal judge family court Patiala House New Delhi. mu jo case ta करथिली petition file करथिली it was for prohibiting the publication of contents of the petition, pleadings, proceedings, documents, or any part thereof published in the media platform and for urgent hearing of the case through video conference. The copy of the objection has been served on the learned counsel for the husband petitioner. Both the petitions are taken up for hearing heard at a length. बुझिले आपण जो गणमाध्यम तो दूर रखिया पई कि आम खबर को पेटिशन जो फाइल करथिली सेटा आ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे केमती यथा शीघ्र ए विवाह विच्छेद रो गोटे समाधान बाहरु जहाँ भी ऑर्डर दो जजमेंट तार केमती जल्दी जजमेंट हो दी जन को उचित समय रे न्याय मिलु सेथि पई मु दुईटी पेटिशन फाइल करथिली जोटार सुनानी हैला एट अ लेंथ दीर्घ समय धरिया को सुनानी हैला. पैराग्राफ नंबर 2 आइला पॉइंट 2. In view of the submission of the learned counsel of the counter parties and on pursual of the materials of the case record, it is found that the husband petitioner, being a member of parliament, had preferred this proceeding filed under section 13I(IA) of the HM Act 1955 before the learned principal judge family court Patiala House New Delhi along with these petitions to eta mu jo file karthili Delhi re case ta soita edira file karthili with these petitions to avoid publication of their marital dispute in electronic print media and in the social media to safeguard the interest of both parties at the first instance. As the husband petitioner, so also the respondent, as the husband petitioner, so also the respondent wife are the Odia film celebrities, and they have also social and moral value in the public at large. At the same time, being the sitting member of parliament, if their marital dispute shall be published in the electronic print media and in the social media, then that shall cause damage the dignity, prestige and reputation of the husband petitioner, so also his counterpart, mane respondent wife. But it is vehemently objected by the learned counsel for the wife respondent that after instituting this proceeding before the learned principal judge family court, Varshankar okila मोर जो ऑब्जेक्शन थिला मोर जो पेटिशन थिला कि गणमाध्यम टू आम मैरिटल डिस्कॉर्डर न्यूज को दूर रखा जाऊ दुई जनकर मान मर्यादार रक्षा करिवा पई सम्मान को रक्षा करिया पई ताकू वर्षा तांको वकीलंक माध्यम रे कोर्ट रे विरोध करथिले कड़ा विरोध करथिले. द हस्बैंड पेटिशनर हिमसेल्फ फर्स्टली instituting this proceeding before the learned principal judge family court Patiala House New Delhi, the husband petitioner himself firstly published their marital dispute to the electronic print media and in the social media, from which source the wife respondent came to know about filing of case by her husband against her for their marital dispute, for which she preferred a transfer petition before the Honorable Apex Court, and considering the factual aspects real cause of action, the Honorable Apex Court has been pleased to transfer the same to this court. So, the respondent wife submitted that. Varsha कहले
पिटिशन माध्यम रे वकीलों माध्यम रे कि दिल्ली रे केस फाइल कला परे मु कुआडे प्रथम आम दी जनकर मैरिटल डिस्कॉर्ड को सोशल मीडिया रे आनी थिली। एटा आपण माने समस्त जानी थिबे दिल्ली रे मु केस फाइल करिछि बोली आपण माने समस्त जानिबा को पाई थिबे जेतेबेले वर्षांकर केसटा कटक रे फाइल हेछि बोली प्रथमे न्यूज रे बाजिला ता परे ता पूर्वरु मु ना केबे कोनोसी गणमाध्यम द्वारा ना मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ना प्रिंट मीडिया ना सोशल मीडिया कोनोसी मीडिया माध्यम रे मु कहारी को जणी नथिली कि मु गोटे डिवोर्स पिटिशन फाइल करिछि बोली केही जानी नथिले बट सीएठी मिछ कहले। So the respondent wife submitted that when her husband petitioner himself firstly had disclosed about filing of the case and their marital dispute before the electronic print media and in the social media and restraining the media platform to publish about their material dispute and day-to-day progress of the proceeding shall no way cause prejudice to either of the parties. से कहले मु कुआडे मीडिया को जेहेतु आगे देछि वर्तमान मीडिया उपरे रोक लगेबार कोनोसी दरकार नाही ताधरे कोनोसी फायदा हबार नाही। प्रतिदिन रो प्रोसीडिंग हो प्रतिदिन रो हियरिंग हो मीडिया प्लेटफॉर्म सबु जक पब्लिश करि परिबो मैरिटल डिस्प्यूट उपरे डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसीडिंग ताकू पब्लिश कले भी कोनोसी प्रकार रो आउ ताकू अटकेले कोनोसी प्रकार असुविधा हबनी सॉरी अटकेले किछि माने रहिबनी तो पब्लिश करंतु देखांतु से माने वर्षा मैडम एया कहिथिले तापर से उठू इन व्यू एटा नंबर पॉइंट नंबर 3 पैरा नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 in view of the submission of the learned counsel for the wife respondent it is not disputed that after institution of the proceeding before the learned principal judge family court Patiala house New Delhi this fact had been published and brought to the media platform by her husband petitioner himself for which she came to know about the institution of the proceeding. Once again a bald lie by respected madam कि मु मीडिया को प्रथम देछि। Thereafter she had preferred a transfer petition before the honorable apex court. However, after institution of this proceeding the wife respondent has also filed a proceeding under section 9 HMA Act before this court wide CP number 312 by 2020 against her husband petitioner on 7/8/2020 and that had also been published in the electronic print media and in the social media. वर्षा मो विरुद्ध जो केस फाइल करथिले कटक रे दुईटी गोटे डोमेस्टिक वायलेंस रो गोटे राइट टू रेस्टिट्यूशन रो दीटा जाक भी न्यूज रे बाजी सारथिला पब्लिश हे सारथिला कारण सेउठ तो लोक जानिबा आरंभ कले आम दुई जनकर डिस्प्यूट चलीछि बोली आ सेटा को मु छणै नि आके इट वाज क्लियरली एंड ओनली बाय ऑनरेबल मैडम when the respondent wife is an Odia actress and social worker and the petitioner husband being a Odia film actor so also sitting member of parliament being celebrities when they have got so popularity throughout of Odisha it is the exception of the public at a large to know about the fact of their marital dispute what they have placed before each other through in the electronic print media and in the social media. आमे दी जन जाक पब्लिक फिगर बहुत लोक हमको भल पाती बहुत लोक हमको जानती चिन्हती आम विषय जानिया को चाहती तो एते पॉपुलैरिटी आउ एते संख्यार लोक पब्लिक एट लार्ज तो सेमानकर जानिबार अधिकार भी अच्छी तांको अटके हब नाही तो मीडिया सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया ए न्यूज ए सब माध्यम रे खबर पहुंचवाटा किछि भूल नुहे तांको अनुसार पुणी थरे लिखाई तांको वकील ए आर्गुमेंट रखिथिले वर्षांक वकील तांको तरफरु ए आर्गुमेंट रखिथिले इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट द प्रेस is the fourth pillar of the democracy. Undoubtedly, yes. I also agree with this. Press ba media hochi fourth pillar of a democratic country. Amo Bharatara fourth pillar ye. The highest important role of media in our day-to-day life is pretty evident.
The media must act as a third eye and keep society aware and informed of what happening around the world. Eta tanko okilo kahichenti. As per the settled principle of law, such burden of the fourth pillar of the democracy to publish and print cannot be snatched away when that has been disclosed before them by the parties or by their respective learned counsel before filing of this petition and proceeding by respective parties. केही अटकई पारिबे नाही गणमाध्यम को बा सोशल मीडिया को केही अटकई पारिबेनी ए मान दि जनकर खबर विषय रे छापिबा पई बा जणैबा पई बा कहिबा पई. At the same time, such electronic, print media and in the social media cannot be permitted to scan the day-to-day proceeding of the court, so also pronounce a pre-trial judgment on the oral version of the parties, so also their respective learned counsels, which is the duty of the court to pass the judgment on the basis of oral, so also the documentary evidence of the parties. Of course, गणमाध्यम रे आज मु जदि गोटे कथा कहीदेवी सेटा जे कोर्ट रो जजमेंट हो कोर्ट रो राय हम एटा असंभव असंभव किए भी वर्षा भी कहीदेवे सी भी असंभव एटा कोर्ट रो अधिकार अच्छी मैटर विचाराधीन कोर्ट जहाँ फैसला नेबे माननीय अदालत जहाँ फैसला नेबे ताको हम समस्त मानिया को बाध्य. Hence, the petition preferred by the husband petitioner preferred by me, the petition preferred by the husband petitioner for मनोदी टिके देखो जेटा सुनंतु आज्ञा ए लाइन पर्टिकुलरली जोटा कि वर्षा एबे व्यस्त है कि धैर्य हरा है कि मो विरुद्ध रे उल्टा कहउचंती एटा तांको एक्सपोज करूची आज्ञा. The petition preferred by the petition preferred by the husband petitioner for prohibiting the publication of contents of the petition, pleadings, proceedings, documents, or any part thereof published in the media platform and for urgent hearing of the case through video conference is hereby rejected. मु मीडिया ऊपर जो रोक लगेबा को आरंभरू अनुरोध करथिली मान्यवर अदालत को आम दुई जनकर मान सम्मान और इज्जत पाई कि दुई जनकर परिवार मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा और इज्जत पाई कि वर्षा मैडम कर विरोध जोगुरु से पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गला एवं जेते जल्दी तार समाधान केमती हो ए विवाह विच्छेद सेथि पाई कि भी जो अनुरोध आमे करथिलु ताकू भी वर्षा मैडम विरोध करथिले ताकू भी रिजेक्ट कर दिया गला. एटा मु नुहे आज्ञा एटा ऑनरेबल कोर्ट रो ट्रू कॉपी again. I am ready to upload all these things. तो कौन कहबी आज्ञा माने ये होची प्रकृत सत्ता